Yes. So let's start the chapter with the different note, a different thing which is easier for you as well and which will be effective for the past papers as well. So we are going to start the topic with the word isotopes. Yes, bacho, do you know this word? What this word means? Isotopes. Yes. Anyone of Atoms you? of the same element with the different number of neutrons. Yes, we know that the definition is atoms of same element. Atoms of same element having what? Having Different number of neutrons. Sir, having same atomic number but different atomic mass number? Yes, having same atomic number, or you can say that proton number, right? Both the words are right. But different atomic mass, right? This is the definition we learned in O levels as well, और हमने उसको याद करके हमने पेपर में एग्जाम्स में मार्क्स भी दिए इसके atoms of same elements having same proton number but different atomic mass, or you can use the word nucleon number over here as well, or you can use the word like atomic mass and mass number as well, right? इसमें कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, सबके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और अभी कोई एक और बच्चा भी मुझे डेफिनेशन बता रहा था, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्लोरीन है, एक है 37 वाला क्लोरीन और एक आपके पास एक 35 वाला क्लोरीन, सो यू कैन सी दिस कि हम इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। सो फोकस ओवर हियर 17 protons in both of them, electrons both of them having 17 electrons as well, and if you talk about neutrons, so it has 20 neutrons and it is having 18 neutrons. So you can even write the definition as well. They have same protons. You can use this one as well. They have same protons but different neutrons. So if you want to use this definition, so you can even use this definition as well, that atoms are the same elements having the same number of protons but different number of neutrons. So you can even use this definition as well, right? तो हमने इसको काफी पढ़ा था और बड़ा आराम से हम इसको याद कर भी लेते थे और बड़ा मजे का लगता था सबको कि यार इतनी आसान सी डेफिनेशन है, बट आगे जाके शायद आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया होगा इसने आइसोमर्स के साथ, और उसके बाद फिर इतना ज्यादा परेशान आप लोगों को नहीं किया होगा, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर अबाउट दिस, राइट? अगर आप क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालते, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो आप कैसे निकालते? आपको टीचर आपकी बताता था कि यार 25% ये वाला क्लोरीन होता है, 75% ये वाला क्लोरीन होता है, तो आप क्या करते हो? आप करते हो 75% जो है मल्टीप्लाई कराते हो उसके एटॉमिक मास से, 25% को मल्टीप्लाई कराते हो उसके एटॉमिक मास से, ठीक है ना? और आपके पास आ जाता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन विच इज 35.5, विच इज 35.5। अब ये जो आपके पास एटॉमिक मास आ गया है डेसिमल में, एटॉमिक मास इन डेसिमल, दिस इज व्हाट एटॉमिक मास इन डेसिमल, ये एटॉमिक मास आ गया डेसिमल में, इट इज एक्चुअली शोइंग व्हाट? atomic mass in decimal shows the presence of isotopes. It shows what? It shows the presence of isotopes. ये आपको बताता है क्या? Presence of isotopes. For example, अगर आप देखते हो, this is whole number, right? What is this? This is the sum of protons and neutrons. This is the whole number. This is what? Proton और neutron का sum. तो for example, अगर 35.5 है क्लोरीन का, तो आप क्या बोलोगे यार कि आपके पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 17.5 जो है आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये जो 0.5 में डेसिमल आ रहा है, इसका मतलब ये जो मास आपके पास 0.5 में आ रहा है, ये आपको बता रहा है कुछ ना कुछ बात, और वो ये बात बता रहा है कि क्लोरीन के लाजमी आइसोटोप्स होने वाले हैं, क्योंकि इसका मास पॉइंट में आ रहा है, तो ये एवरेज एटॉमिक मास लिखा हुआ है और एवरेज उसी का निकालते हैं जिसके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना? तो आपको सिर्फ ये बात पता थी ओ लेवल्स में, आपको ये बताया जाता था कि if the atomic mass is in decimal, so it is showing you the presence of isotopes. It is not
telling you the number of isotopes. It is not telling you the number of isotopes. It is only telling you what? It is only telling you the presence of isotopes, but not the exact number of isotopes, right? ये हमें सिर्फ क्या बता रहा है? ये हमें सिर्फ बता रहा है ये कि आपके पास आइसोटोप्स होंगे, बट कितने होंगे ये नहीं बता रहा, राइट बच्चों? Yes, sir. एंड देन एक और बात जो कि आपको ओ लेवल्स में आपने सीखी होगी वो ये थी कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, right, so definitely valence electrons are also same. When valence electrons are same, definitely the chemical properties are going to be affected on electrons. So if electrons are same, then the isotopes having same chemical properties. So you also know this, that same chemical properties कैसी होंगी बच्चों? सेम होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. और अगर आपसे रीजन पूछा जाए why, so you know that because number of electrons are same, number of electrons are same, but definitely there is a variation in physical property, there will be a difference in physical property, variation in physical property. Definitely mass change हो गया, आपके पास mass बढ़ गया है तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ गई होगी. डेंसिटी भी क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी. मास बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया होगा, डेंसिटी बढ़ गई होगी, तो डेफिनेटली ये चीजें उसकी डिफरेंट हो जाएंगी, मास डिफरेंट हो जाएगा. इज दैट राइट बच्चों? ये सारी वही बातें हैं जो कि पुरानी है. Yes, sir. राइट और नॉट? ओके, नाउ Yes. द सीन इज दिस. सीन ये है कि आपको पता कैसे चला सर, ये हमें पता कैसे चला कि इसके आइसोटोप्स 2 हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स 2 हैं, ये हमें कैसे पता चला? और हमें ये कैसे पता चला कि क्लोरीन का जो 37 वाला है इट इज 25% in the nature and the 35 वाला जो है it is present 75% in the nature. How do we know this? हमें कैसे पता चला? साइंटिस्ट को कैसे पता चला? तो भाई साइंटिस्ट को पता चला कैसे? The process name is mass spectroscopy. This is one of the technique which can used by the scientist or by the lab analyst, जो कि इसको यूज करके आइडिया लगा सकता है कि how many isotopes are there and what are the percentages of these isotopes and what is the average atomic mass of any element, right? So for example, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये किस लिए यूज हो रहा है. It is used to identify the number of isotopes and the presence and the abundance of that isotopes, and a lot of uses as well. But right now you are in AS and in the chapter atomic structure we just have this use, right? जब आप A2 में आ जाओगे तो आप इसका एक दो यूज और पढ़ोगे, ठीक है ना, बट वो A2 का पार्ट है. तो आप देखें आपके पास यहाँ पर होता है एक सिलेंडर टाइप का कुछ, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं. इस तरह का आपके पास समझने के एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, और वो इंस्ट्रूमेंट जो है आपके पास, इसके बाद ये इस तरह से वो घूम भी रहा होता है. ठीक है, कुछ थोड़ा सा और टिल्ड होता है वो, बट क्योंकि अभी मेरे पास उसका कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं बनाने के लिए, तो मैं इसको इसलिए थोड़ा सा क्रॉस बना रहा हूँ. वैसे ही थोड़ा सा और घुमा हुआ होता है. बस ये इतना ही हो सकता है मेरे पास अभी, तो हम इसको इतना ही कर सकते हैं, ठीक है. वैसे ये थोड़ा सा और टिल्ट होता है, बट उसको डायग्राम इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है अंदर, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना. तो आपके पास वी हैव अ सैंपल इंजेक्टर ओवर हियर. हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ से हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इसमें सैंपल इंजेक्ट करते हैं, राइट. दिस इज सैंपल. यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, और यहाँ से इस पर हम अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू. सो यू कैन से दैट कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अटैक करे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो रही है जो कि अटैक कर रही है सैंपल पर. जब सैंपल यहाँ पर आता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सैंपल आया यहाँ पर, ठीक है, सैंपल आया, सैंपल के आने के बाद आपने इसके ऊपर अटैक किया इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू.
अब वो सैंपल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो क्या होंगे, सैंपल यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगे इस तरह, ठीक है, यहाँ से सैंपल्स निकलेंगे। अब यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ फॉइल्स लगी हुई होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपको एक्सेलरेट करती हैं आइंस को, इन आइंस को एक्सेलरेट करती हैं, और ये आइंस को एक्सेलरेट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होती है क्योंकि इन आइंस को एक्सेलरेट करती है, और फिर ये आइंस फर्दर एक्सेलरेट होकर यहाँ से आगे चले जाते हैं। जब ये आगे चले जाते हैं, यहाँ पर जो टर्निंग आ रही है, इस टर्निंग पे आपने लगाया हुआ होता है मैग्नेट, ठीक है, इस टर्निंग पे आपने लगाया हुआ होता है मैग्नेट। तो ये आपके पास है मैग्नेटिक इफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये इनको घुमा देती है, ठीक है ना, ये ऐसे घूमते हैं, इतना ज्यादा घुमा हुआ नहीं होता ये, बस ये मैंने कुछ ज्यादा सीधा कर दिया, इतना सीधा नहीं होता क्योंकि बस कोई शेप नहीं था यहाँ पर, इसलिए मैंने सीधा कर दिया। यहाँ से जाके ये आने के बाद यहाँ पर एक लगा हुआ होता है आपके पास डिटेक्टर, उस डिटेक्टर पे फील होती है, इस डिटेक्टर पे फील होने के बाद ये क्या देती हैं आपको, रीडिंग्स देते हैं। ये आपको क्या देता है, रीडिंग देता है, ठीक है ना, ये रीडिंग देता है आपको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ये जो डिटेक्टर्स होते हैं ये आपको रीडिंग देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, एंड दैट ग्राफ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीड। हमें उसकी रीडिंग आनी चाहिए, उसको रीड करना आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास है एक एक्स एक्सेस और ये आपके पास आ गया वाई एक्सेस, ठीक है ना। वाई एक्सेस पे आपके पास क्या है बच्चों, वाई एक्सेस पे आपके पास होती है अबेंडेंस। क्या होती है आपके पास वाई एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे आपके पास होती है अबेंडेंस, ठीक है ना। अबेंडेंस मतलब वो कितना परसेंट मौजूद है नेचर के अंदर या उस सैंपल के अंदर, ठीक है ना। अभी जो हमने सैंपल डाला डेफिनेटली वो हमने सैंपल कहीं से लिया होगा, और वो सैंपल जो है असल में क्लोरीन का ही होगा। उस क्लोरीन में जितना परसेंटेज आएगा किसी भी चीज का, 37 का या 35 का, हम उसको यही सपोज करेंगे कि भाई यही परसेंटेज है नेचर में भी, डेफिनेटली। क्योंकि जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट जगह से सैंपल लेके आते हैं, वो डिफरेंट जगह से सैंपल लेके आते हैं, तो उसके बाद वो एवरेज निकलता है उसका भी एंड में ना। फॉर एग्जांपल, दिस इज शोइंग यू 25% अबंडेंस, दिस इज शोइंग यू 50% अबंडेंस, दिस इज 75%, एंड दिस इज द 100% रिजल्ट, ठीक है ना। Now we have 35 over here, and for example 40 over here, and this is 35, 36, 37 as well. For example, अगर आप 35 वाले को देखते हो तो यहाँ 35 वाला जो होगा बच्चों, ये 35 वाला फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ तक लाइन दे रहा है, ठीक है, और ये 37 वाला जो होगा वो डेफिनेटली इसकी जो पीक होगी वो यहाँ तक होगी, ठीक है ना। Now you just look at over here at this graph. This graph is showing you what, abundance. This is what, abundance, यानी कि percentage composition या percentage present over here, and this is showing you MR, or you can say that right now we are talking about atom. So this is atomic mass, right? Mass of 1 mole of any atom, right? You can see this according to the conclusion, according to the graph reading, you can see this कि यार ये जो 37 वाला है, the one which is of 37, इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है आप देखें, 25% है नेचर में, और जो 35 वाला है उसकी कितनी है, 75% है। तो आप इस तरह निकालेंगे, आप बोलेंगे सर 35 वाला जो क्लोरीन है वो इस नेचर में है 75%, राइट, प्लस ये दोनों अलग अलग हैं तो उन दोनों को प्लस करना जरूरी है, और जो 37 वाला है ना सर उसकी परसेंटेज 25%, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एवरेज क्लोरीन का एटॉमिक मास जो आ रहा है इस दुनिया का वो है आपके पास 35.5। नाउ दिस मास स्पेक्ट्रोमेट्री is actually telling you the percentage, it is actually telling you the abundance as well. You can say that percentage और abundance दोनों में से कोई भी नाम लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कि ये है आपके पास कि आपको बता रहा है कि इसके कितने और कौन कौन से आइसोटोप्स होंगे और कितने कितने परसेंटेज होंगे, ठीक है ना बच्चों। इतनी सारी चीजें हमें बता रहा है, कितने आइसोटोप्स हैं, कितने कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये सब हमें कौन बता रहा है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Sir, I have a question. जी बेटे पूछें, कोई मसला नहीं। Sir, what is the magnetic field that you have marked on the diagram?
बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास वो एक्चुअली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का काम सिर्फ इतना है कि वो आपके जो आइंस है ना, आपके पास जो सॉल्यूशन में या आप सॉरी आपके पास सैंपल में जो आइंस हैं उसको सिर्फ घुमा रही है, उसको एक रुख दे रही है, ठीक है ना, उसको एक डायरेक्शन दे रही है, ठीक है। Alright, sir. अभी इसके अलावा और कोई काम नहीं है इसके अंदर, अगर इसके अलावा कोई काम होगा तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? Now, I just want to add one more thing over here. When you are going to do past papers, बच्चों जब आप इसके पास पेपर्स करेंगे तो पास पेपर्स में आपको जो y एक्सेस है ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आएगा। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो दरअसल वो जस्ट चेक करेगा आपको, वो आपके साथ थोड़ा सा खेलेगा, आपको अवेयर रहना है उसके खेल से। देखें फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट all the time abundance is always 100%, right? अबेंडेंस तो 100% ही होगी ना सबकी मिला के, तो सबकी मिला के Yes. अगर 100% है और मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 एंड 5, अब वो एग्जामिनर इस तरह देता है 1 2 3 4 5 दे देता है, 1 2 3 4 5 उसने दिया है, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो परसेंट है ये कितनी है, इट इज 20%, यहाँ तक हो गया ये 40%, यहाँ तक हो गया 60, यहाँ तक 80 और यहाँ तक 100। व्हाट डू यू से बच्चों, ऐसे ही होगा? Yes, sir. And sometime they gave us in terms of 1 2 3 4, so it will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 or 10. Now it is a factor of 1, so definitely 1 का मतलब क्या हो गया 10%, 4 का मतलब हो गया 40%, 7 का मतलब हो गया 70% और 10 का मतलब हो गया 100%, राइट बच्चों? Yes, sir. सो अगर आपके पास इस तरह की अबेंडेंस गिवन हो y एक्सेस पर, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसके अकॉर्डिंग यूनिट बना लेना, उसको 100 पे डिवाइड कर देना उसको, और यूनिट बनाकर फिर उसकी जो है ना एवरेज लेनी होगी आप, ठीक है बच्चों? चलें एक क्वेश्चन Yes, कर sir. लें, क्वेश्चन करेंगे आप लोग, लेट्स चेक कि आपको कितना समझ में आया, और विल चेक अबाउट द पास्ट पेपर्स क्वेश्चन एज वेल। So I am stopping the recording right now because we are going to do some past papers questions. Okay, so there are some calculation as well based on atomic number, proton number, and these things. For example, if you have a chlorine molecule or a chlorine atom, right now I'm drawing over here. तो अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 37 और यहाँ लिखा हुआ है 17. So we know this is actually chemical symbol of chlorine. We know this is a chemical symbol of chlorine, right? This is actually the mass number, right? You can call this as atomic mass as well, right? You can call this as nucleon number as well. This is nucleon number, right? This is nucleon, and nucleon का मतलब होता है this is the sum of protons and neutrons, right? You need to remember this. This is not neutron, this is nucleon. ये है neutron, ठीक है ना? तो keep the difference of these two words, ये आपको परेशान कर सकता है, ठीक है ना? This one is proton number, and proton number is actually the identity of any element. This is actually identity of any element. It can never be changed, ये कभी change नहीं हो सकता, और you can call it as atomic number as well. ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. It can be represented by Z and this can be represented by A, right? You need to remember these all things, and these are very easy. For example, if any atom is going to convert into ion, if any atom is going to convert into ion, that means there is a change in electron. There is a change in electron. And if we talk about isotopes, bachcho, so definitely there is a change in neutrons. There is a change in neutrons. So you need to remember this, these all things. And we know this, electrons are negative, neutrons are neutral, and protons are positive. So where is proton? This is positive, right? So you need to remember this as well. आपको याद होगा प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन के बारे में कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, और इसका मास 1, इसका मास 1 और इसका मास 1/1840 होता है, जो कि आप नेग्लिजिबल भी बोल सकते हो.
ये आपके पास न्यूक्लियस में होता है, ये आपके पास शेल्स में होते हैं, और ये भी आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो these things are the basic previous things that you need to know about that, right? I think आप सबको ये याद होगा, right बच्चों? Yes. And if you Yes. talk about the things according to their mass, just look at over here. For example, we have two plates, right? For example, we have two plates, and these are plates adjusted like this. For example, आपके पास मैंने एक plate लगा दी positive और एक लगा दी मैंने negative. This is a positive plate, right? And this is the negative plate, right? We just adjusted two plates over here, right? Like this. This is a positive plate. And this is the negative plate. Right? And there is a source. This is the source by which the subatomic particles are going to be bombarded, right? Source of subatomic particles. Subatomic particles are going to be bombarded by this source, right? So it is actually bombarding electrons, protons, and neutrons. So you need to keep remember this, that whenever we talk about protons, so protons will move towards negative, right? So protons are moving towards negative plate, right? And if you talk about electrons, so electrons are moving towards positive plates, right? You need to keep remember, electrons are moving towards positive plates, while neutrons will go straight, right, Bacho? Yes. Now, what do you write about this? If you want to write something, so what are you going to write about this? क्या लिखेंगे आप इसके अंदर? You need to write these conclusion in your copy first. Electrons move towards the negative, positive plate, and the protons are moved towards the negative plate, and the neutrons will move straight, right? There is no deflection towards any plate. This is सर showing एक you सवाल that neutrons are neutral. जी बेटे. सर यहाँ पर आपने दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन की जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा है। सर वो ज्यादा Yes. होती है या फिर सेम होती है? नहीं ज्यादा होती है, और मैं लिखवा रहा हूँ अभी। आप पहले वो लिखें कि आपके पास न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, सो दे विल नॉट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन, दे विल मूव स्ट्रेट in the electric field, right? If we talk about protons, so proton deflect towards the negative plate, and electrons deflect towards the positive plate according to their charges, right? But if you talk about proton, the proton deflect with a minimum angle, right? Proton deflect with a minimum angle. You can see this, the difference of mass in protons and electrons. Just look at over here, the mass difference. Proton अगर 1 है तो उससे 1/1840 टाइम्स छोटा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है? 1840 टाइम्स छोटा है इलेक्ट्रॉन। कितना हल्का है, कितना वेट में नेग्लिजिबल है इलेक्ट्रॉन। उसके वेट में कमी होने की वजह से उसका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इट इज ग्रेटर, राइट? वो ज्यादा डिफ्लेक्ट क्यों हुआ है? बिकॉज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज ग्रेटर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर इन वेट। तो जो प्लेट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने सेम लगाई है, तो जो लाइटर वेट है उसको तो बड़े आराम से खींच लेगी ना वो। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट विद अ ग्रेटर एंगल, बिकॉज दे आर लाइटर इन वेट, राइट? यस ठीक है बेटे? So just write it down. It is very important to remember.
ठीक है बच्चों? Then definitely I think you are well aware about the calculation of electron, protons and neutrons in an element. For example, if you talk about chlorine, or we already discussed chlorine in a class. So let's talk about uranium. It is 92 to 38. We know that this is a proton number, and remember this, that proton number is always a smaller one. Proton number is always a smaller one because it is only telling you the protons. If you talk about nucleon number, so it is actually telling you the sum of protons and neutrons. So definitely, which is showing you the sum, so definitely it is going to be a greater value. So this is always a larger value, which is a mass number or nucleon number. If you talk about protons, so proton number से आप निकाल सकते हो protons, so it has only 92 protons. If you talk about electrons, so electrons are same in a neutral atom. Atoms are electrically neutral. It has the same number of protons and neutrons, or protons and electrons. So that is why they have the same number of electrons as well. But if you talk about neutrons, so you can see this. ये है बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, और ये है सिर्फ प्रोटॉन. So if you subtract the proton number from nucleon numbers, you will see that कि प्रोटॉन से प्रोटॉन कट जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ न्यूट्रॉन्स. So 238 minus 92 will give you 146 neutrons, right बच्चों or not? Yes, sir. That's the thing that you need to understand. So I am giving you homework about this. Let me show you one example. वो example मैं करके दिखा रहा हूँ आपको. उसके बाद आपने मुझे homework करके दिखाना है. What is the example? Just look at over here. For example, I am talking about fluorine, right? I am talking about fluorine. So what is the proton number of fluorine? The first thing that you need to write in your copies, the proton number of fluorine is 19. Then the nucleon number is, what is the nucleon number over here? I know Oh, 19. sorry, yaar. Sorry. Proton number is 9. Yes, वो मैंने देख लिया बेटे. Nucleon number is 19. And then if you talk about protons, so we have 9 protons, we have 9 electrons, we have 10 neutrons. ये आपने लिखना है, ठीक है ना? उसके बाद if you talk about electronic configuration, about shells, the electronic configuration is like you will have 2,7, and then you need to draw this as well. पहले shell में आपके पास आएंगे 2 electrons, then second shell में आपके पास आएंगे 7 electrons, right? You need to draw this as well. अभी हम क्योंकि electronic configuration जब आप ये कर लेंगे, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको पुरानी वाली याद है अच्छी तरह, then हम इसमें नई वाली ऐड करेंगे, ठीक है? This is electronic configuration as well, and then we can see this. It requires 1 electron to complete its shell, so definitely it will receive electron and become F minus 1. क्या बनाएगा ये? F minus 1 बनाएगा. This is anion because this is a negative charge. इसका charge कितना है? -1 because it has 7 electrons in the outermost shell. And when someone receive electrons, so definitely it is non-metal. So it is one of the non-metal, right, with a negative charge. And if it's receive electrons, so how it looks? It looks like this. पहले shell में थे 2 electron, दूसरे shell में थे इसके पास 7 electrons. They already have 7 electrons in the outermost shell. And when it received, जो electron receive किया है, it should be different. वो कैसा होना चाहिए? Different होना चाहिए. और जब भी electron receive हो जाता है तो उसके बाद ये charge particle बन जाता है, और charge particle का charge हम square bracket के बाहर लिखते हैं. And now if you talk about proton, electron, neutron, so protons are still 9, electrons are 9 plus 1, 10, and neutrons are still 10. And if you talk about electronic configuration, so they are actually now 2,8. Right, bachcho, or not? Yes, sir. So you need to write each and everything over here same as it is. जो मैंने अभी लिखा है वो सब कुछ आपने लिखना है. और दूसरा ये कि अगर आप इसका ग्रुप डिफाइन करना चाहें तो आप ग्रुप भी लाजमी डिफाइन करना है. इसका ग्रुप नंबर कौन सा है इसका बच्चों? ग्रुप नंबर है आपके पास 7, राइट. और पीरियड नंबर कौन सा है इसका? पीरियड नंबर है आपके पास 2, राइट. तो देखें ग्रुप नंबर पता चलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको बता रहे हैं कि इसका ग्रुप नंबर 7 है. और शेल नंबर ऑफ शेल्स आपको बताते हैं पीरियड नंबर. तो ये 2 शेल्स कवर कर रहा है, तो इट इज फ्रॉम पीरियड नंबर 2. तो ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी है. और किसके लिए बतानी है ये सारी की सारी चीजें? आपका जो होमवर्क है वो आपका होमवर्क है किसके लिए? सोडियम, मैग्नीशियम
सोडियम, कैल्शियम एंड अल्मोनियम, राइट। उसके अलावा आपको ये करना है, किसके लिए आपको ये करना है, ऑक्सीजन एंड क्लोराइड एंड फॉस्फाइड, राइट। इन तीनों के लिए आपने करना है, 6 के 6 के लिए आपने करना है ये काम, सही है ना। आपने सब कुछ लिखना है, प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज, ग्रुप, पीरियड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ आयन, और उसका स्ट्रक्चर, सब कुछ बनाना है आपने। ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये सैंपल यूज करते हुए आप ये 6 के 6 बनाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. Any problem, anything that you want to ask? Yes, sir.